Very good morning, students. I hope you all are great and revised your previous chapter. Today we are going to do our chapter 6, which is MS PowerPoint 2016. So without wasting any further time, let's dive into the chapter. The name of our chapter is MS PowerPoint 2016 and the topics which we will study here are starting MS PowerPoint, viewing a presentation, MS PowerPoint 2016 window screen, rearranging slides in a slide sorter view, using shapes, run a slideshow, adding transition, reviewing and printing presentations and adding animations. तो MS PowerPoint एक पार्ट होता है MS Office Suite का to make presentations. ये हेल्प करता है हमारी टू क्रिएट इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस बाय एडिंग टेक्स्ट, डायग्राम्स, क्लिप आर्ट्स, कलर्स, इमेजेस, साउंड्स, वीडियोस with animated effects, etc. Now presentations are made up of several pages जिन्हें हम बोलते हैं slide. ये जो slides हैं ये डिस्प्ले होती है one by one on a screen during presentation. तो MS PowerPoint template ऑफर करता है हमें variety of pre-designed slides to meet our requirements. नाउ हम रीअरेंज कर सकते हैं अपनी स्लाइड को, एक न्यू स्लाइड उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं स्लाइड को, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कंटेंट एंड लेआउट चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. सो हाउ टू स्टार्ट पावर पॉइंट. सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है ऑन द विंडोज टास्क बार. एक पॉपअप मेन्यू अपीयर होगा लाइक दिस. फ्रॉम देयर वी हैव टू क्लिक ऑन ऑफिस 2016 प्रोग्राम दैट यू वांट टू रन एंड क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम 2016 ऑप्शन. नाउ हमारे पास इस तरीके की विंडो आएगी पावर पॉइंट की जिसपे वी हैव क्विक एक्सेस टूल बार, वी हैव आवर टाइटल बार, दिस इज आवर रिबन, वी हैव जूम स्लाइडर, वी हैव व्यू बटन्स, वी हैव आवर स्लाइड layout, we have comments, notes pane, slide pane, we have our slide navigation pane and status bar. Now PowerPoint toolbar at a glance. Home tab, यहाँ पे हमारे पास फीचर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं हमें टू एडिट द स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग एंड एडिटिंग. फिर आता है हमारे पास इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब में हमारे पास फीचर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारी टू ऐड टेबल्स, इमेजेस, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, वर्ड आर्ट एंड मीडिया क्लिप्स. फिर आता है हमारे पास डिजाइन टैब. ये टैब हमें अलाउ करता है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को एडिट कर सकते हैं द वे इट लुक्स. नाउ ये इंक्लूड करता है फीचर जैसे हमारा पेज का सेटअप, हमारी थीम्स, हमारे बैकग्राउंड स्टाइल्स एटसेट्रा. फिर आता है हमारे पास ट्रांजिशन टैब. ये अलाउ करता है हमें कि हम अपने स्लाइड ट्रांजिशन को, इफेक्ट को या फिर ट्रांजिशन के टाइमिंग्स को हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं. फिर आता है हमारे पास एनिमेशन टैब. ये अलाउ करता है कि हम यहाँ पे कस्टम एनिमेशंस को ऐड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में. आप सेलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम प्रीव्यू एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन एंड एडवांस टाइमिंग. और फिर हमारे पास आता है स्लाइड शो टैब. यहाँ पे फीचर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं हमें टू सेलेक्ट हाउ योर प्रेजेंटेशन विल बी डिस्प्लेड, कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो डिस्प्ले कैसे होगी. फ्रॉम हियर आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो अपना स्लाइड शो, सेटअप कर सकते हो स्लाइड शो एंड एडजस्ट कर सकते हो मॉनिटर सेटिंग्स. फिर आता है रिव्यू टैब. ये टैब अलाउ करता है हमें टू प्रूफ रीड, translate language, comment slide and compare your presentation. Then we have view tab. यहाँ पे फीचर होता है जो अलाउ करता है टू सेट द व्यू ऑफ योर प्रेजेंटेशन, क्रिएट मास्टर व्यूज, शो या फिर हाइड फीचर्स, जूम, switch from color to grayscale, adjust windows and add macros. Now in the previous class we have already discussed about creating a blank presentation, adding text in a slide, inserting new slide in your presentation and saving it. Now we shall learn more about presentation. Now using shapes, हम insert कर सकते हैं रेडीमेड shapes जैसे rectangles, circles, arrows, lines, flow charts, callouts etc. to your presentation slides. ये जो shapes हैं ये rotate हो सकती हैं, they can be flipped, colored and resized. ये shapes हमारी slide को और ज़्यादा elaborative and eye catching बनाते हैं. Now there are some steps to access these shapes. We will click on insert tab, then we will go to shapes option from illustration group and click on the required shape. The pointer will change to the plus sign and हमें place करना है अपना pointer on the slide, फिर drag करना है उसको to adjust the size of the shape. Select the shape style, shape fill, outline, effect and arrange etc. from the format tab of drawing tools. ये जो option है ये appear होता है when you will reselect the shape. In the given slide, selected cloud shape overlap the may God bless you text to send cloud behind the may God bless you. इस टेक्स्ट के पीछे हमें अगर क्लाउड को लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे शेप को, क्लिक करेंगे टू फॉर्मेट टैब ऑफ ड्राइंग टूल्स, देन क्लिक ऑन सेंड बैकवर्ड ड्रॉप down list from
arrange group and select send to back option. Now may God bless you text appear हो जाएगा on the cloud background. रोटेटिंग अ शेप, तो क्लिक करना है अपने पिक्चर पे या फिर शेप पे या फिर टेक्स्ट पे विच यू वांट टू रोटेट, देन मूव द कर्सर ओवर द रोटेशन हैंडल, द कर्सर विल चेंज टू दिस साइन एंड ड्रैग द माउस टू इन द डायरेक्शन जिसमें भी आपको अपनी शेप को रोटेट कराना है. या फिर आप क्लिक कर सकते हो ऑन द शेप, सेलेक्ट द फॉर्मेट टैब ऑफ द ड्राइंग टूल्स, select rotate option from arrange group and you can rotate the shape at any specific angle. Resizing a shape, उसके लिए आप शेप को सिलेक्ट करोगे, ये डिस्प्ले करेगा 8 हैंडल ऑफ द शेप. प्लेस करना है अपना माउस पॉइंटर ऑन एनी हैंडल और जो पॉइंटर है वो चेंज हो जाएगा टू द डबल हेडेड एरो. नाउ आपको ड्रैग करना है अपने हैंडल को टू इंक्रीज या फिर डिक्रीज द साइज ऑफ योर शेप. You have learned many basic things for creating a presentation. Presentation has many slides arranged in a logical order. Let's try to prepare the following presentation. तो सबसे पहले parts of computer. Computer system has different parts जो work करते हैं एक साथ, which is hardware, software, then hardware. Now physical part of a computer जिसे आप touch कर सकते हो, feel कर सकते हो, उसे हम hardware बोलते हैं. Hardware device यानी कि input device, processing device, output device and storage device. Input devices may we have our keyboard, mouse, that is most common input devices. Processing device may we have our CPU. Output device may we have our monitor, speaker, printer, etc. And storage device may we have hard disk, pen drive, DVD-ROM, etc. are common storage devices. Software, there are two kinds of software: system software, application software, and then thank you. So this is what our slides consist of. Now adding transition. Transition एक animation है जो occur होता है जब भी कोई एक slide दूसरी स्लाइड पे मूव करती है ड्यूरिंग अ स्लाइड शो. नाउ आप अवॉइड कर सकते हो एब्रप्ट ब्रेक्स बिटवीन द स्लाइड्स बाय यूजिंग ट्रांजिशंस जो कंट्रोल करते हैं द वे स्लाइड मूव ऑन एंड ऑफ द स्क्रीन. ईच स्लाइड कैन हैव वन ट्रांजिशन. हर स्लाइड के पास एक ट्रांजिशन हो सकता है. आपको अपने स्लाइड्स को सिलेक्ट करना है टू विच यू वांट टू ऐड ट्रांजिशन इफेक्ट. नाउ ऑन द ट्रांजिशन टैब इन द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप आप क्लिक करोगे मोर बटन पे which is this effect options. Now the transition gallery appears like this. PowerPoint comes with the following categories of built-in transition effects. Subtle, ये include करता है fade, wipe, shutter like effect. Exciting, ये include करता है dramatic effects जैसे boards, blinds, ripples, glitter, flopping and zooming. Dynamic, ये hold करता है background of the slide still and apply करता है dynamic effect to the title and other content जैसे पैनिंग, रोटेटिंग या फिर फ्लाइंग ऑन टू दी स्लाइड. नाउ आप सिलेक्ट करोगे कोई भी एक ट्रांजिशन इफेक्ट फ्रॉम द गैलरी. नोटिस एक टाइनी स्टार अपीयर हो जाएगा एट द कॉर्नर ऑफ द स्लाइड. वो इंडिकेट करेगा कि स्लाइड पे ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाइड है. देन आप क्लिक करोगे अप्लाई टू ऑल बटन इन द टाइमिंग ग्रुप. तो ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो ऑल द स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाएगा इन द प्रेजेंटेशन. Adjusting transition speed. तो transition from one slide to another occur होता है speed पे according to your preference. तो उसके लिए आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे अपने स्लाइड को containing the transition effect that you want to modify. क्लिक करोगे ट्रांजिशन टैब पे इन द टाइमिंग ग्रुप. आप ड्यूरेशन एरो पे जाओगे एंड एडजस्ट करोगे स्पीड ऑफ द ट्रांजिशन. द स्पीड ऑफ द ट्रांजिशन इज एडजस्टेड. रिव्यू कर सकते हो आप अपनी ट्रांजिशन स्पीड को बिफोर यू डिलीवर योर प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस. एडिंग साउंड. तो साउंड जो है वो हम ट्रांजिशन इफेक्ट के साथ एड ऑन कर सकते हैं दैट कैन ग्रैब ऑडियंस अटेंशन. तो उसके लिए आप सेलेक्ट करोगे स्लाइड को ट्रांजिशन टैब में टाइमिंग ग्रुप के अंदर आप क्लिक करोगे साउंड ड्रॉप डाउन लिस्ट एरो पे एंड अ लिस्ट ऑफ साउंड अपीयर्स. वहां से आप एक साउंड लिस्ट से चूज कर लोगे. एडवांसिंग द स्लाइड. सो टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. टाइमिंग ग्रुप अंडर एडवांस स्लाइड. तो ऑन माउस क्लिक आप क्या करोगे, आप यहाँ पे यू कैन एडवांस टू द नेक्स्ट स्लाइड बाय क्लिकिंग योर माउस या फिर प्रेसिंग एंटर ऑन योर कीबोर्ड. आफ्टर में आप सेट करते हो अपनी प्रेजेंटेशन टू एडवांस ऑन इट्स ओन एंड ये डिस्प्ले करता है ईच स्लाइड फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम. रिमूविंग अ ट्रांजिशन इफेक्ट, उसके लिए अपनी स्लाइड को सिलेक्ट करना है. देन ऑन द ट्रांजिशन टैब इन द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप क्लिक करना है नन ऑप्शन पे फ्रॉम द गैलरी एंड द ट्रांजिशन इफेक्ट इज रिमूव. एडिंग एनिमेशन. तो एनिमेशन एक स्पेशल विजुअल इफेक्ट होता है जिसको हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे इन अ स्लाइड, टेक्स्ट, इमेज, शेप या फिर कोई बुलेट पॉइंट्स टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव. ये यूजफुल है इन मेकिंग अ प्रेजेंटेशन लिवली. It also helps to emphasize on important points, but
मैनी एनिमेशंस जो है वो डिस्ट्रैक्टिंग हो सकते हैं। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ एनिमेशन होता है, एंट्रेंस, एम्फेसाइज, एग्जिट एंड मोशन पाथ। तो एंट्रेंस इफेक्ट जो होता है ये किसी भी ऑब्जेक्ट की एंट्री को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है इन अ स्लाइड। एंड एम्फेसाइज इफेक्ट जो होता है ये फोकस करता है किसी भी एलिमेंट पे ऑन अ स्लाइड। एग्जिट इफेक्ट देखता है कि कैसे जो एलिमेंट है वो स्लाइड से डिसअपियर हो रहा है। एंड मोशन पाथ मेक्स एन ऑब्जेक्ट मूव विद इन अ स्लाइड। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनिमेशन इफेक्ट इंक्लूड एंट्रेंस एंड एग्जिट। फॉलो द स्टेप्स टू ऐड एन एनिमेशन टू अ टेक्स्ट या फिर एन ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट करना है अपने टेक्स्ट या फिर ऑब्जेक्ट को। ऑन द एनिमेशन टैब इन एनिमेशन ग्रुप आप क्लिक करोगे किसी भी एनिमेशन इफेक्ट पे फ्रॉम द गैलरी। क्लिक द मोर एरो टू सी मोर ऑप्शंस। एंड नाउ ऑल्टरनेटिवली इन द एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप आप सेलेक्ट कर सकते हो ऐड एनिमेशन ड्रॉप डाउन लिस्ट। Now select an animation effect. You can also add the exit effect to the same slide and click the play button in the animation pane to play the animation effect. आप remove कर सकते हो animation को which is applied on the object. In the gallery, entrance effect icons जो होते हैं वो green color के होते हैं. Emphasize effect icons जो होते हैं they are yellow in color and exit effect icons are red color. Combining animation effects, तो उसके लिए आप select करोगे text box effect को from the animation pane window. On the animation tab in the timing group आप click करोगे start drop down arrow पे and a drop down list appears. आप select करोगे with previous या फिर after previous option and ये option play होगा, play कर देगा हमारे animation को immediately before and after the previous animation is played. Then click on play button. Removing the animation effect, उसके लिए आप क्या करोगे, आप राइट क्लिक करोगे अपने एनिमेशन इफेक्ट पे इन द एनिमेशन पेन विंडो। सेलेक्ट द रिमूव ऑप्शन टू रिमूव द एनिमेशन इफेक्ट। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो एनिमेशन इफेक्ट को एंड देन प्रेस डिलीट की। व्यूइंग अ प्रेजेंटेशन, तो पावरपॉइंट 2016 हमें 4 व्यूज देता है, ईच ऑफ विच अलाउ करता है हमें टू फोकस ऑन एंड वर्क विद योर प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट वेज। ये ऑफर करता है एक प्रेजेंटेशन व्यू को एज अ स्लाइड शो। आप चूज कर सकते हो वन ऑफ द फॉलोइंग व्यू इधर फ्रॉम द व्यू टैब इन द प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप, या फिर ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो व्यू आइकन्स को ऑन द व्यू शॉर्टकट टूल बार। तो यहाँ पे वी हैव नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू एंड वी हैव फिट स्लाइड टू करंट विंडो, रीडिंग व्यू। नॉर्मल व्यू, इसको हम सेलेक्ट करते हैं बाय डिफॉल्ट। ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है एंड शो करता है स्लाइड को एंड आउटलाइन टैब्स को इन द ओवरव्यू पेन अलोंग विद डिस्प्लेइंग द स्लाइड पेन एंड नोट्स पेन। और जो स्लाइड टैब है वो डिस्प्ले करता है स्मॉल थंबनेल्स ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन एक्टिव प्रेजेंटेशन। टू जंप टू अ स्पेसिफिक स्लाइड हमें बस उसके थंबनेल पे क्लिक करना है। आउटलाइन टैब शो करता है ऑल द टेक्स्ट इन द स्लाइड डिस्प्लेड एज एन आउटलाइन। ये आइडियल होता है फॉर क्विकली एडिंग टेक्स्ट टू अ स्लाइड एंड और प्रीव्यूइंग द टेक्सचुअल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रेजेंटेशन। Slide pane occupies most of the program window and ये show करता है current slide as it will appear in the presentation. Notes pane is below the slide pane. ये provide करता है a place for entering notes that the speaker might refer when delivering the presentation. Slide sorter view display करता है thumbnails यानी कि tiny images of all the slides in a presentation, ताकि हमें order of slide देख सके, add, delete, rearrange कर सके अपने slide को, या फिर उसमें ट्रांजिशन इफेक्ट डाल सके बिटवीन द स्लाइड्स। रीडिंग व्यू डिस्प्ले करता है, ये सिर्फ हमारी स्लाइड को डिस्प्ले करता है विद बटन्स एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन फॉर नेविगेशन। वी हैव नोट्स पेज एंड ये डिस्प्ले करता है स्मॉल वर्जन ऑफ करंट स्लाइड एंड एनी नोट्स दैट गो अलोंग विद इट। ये अलाउ करता है टू एंटर एडिट द स्पीकर नोट्स फॉर ईच स्लाइड। नाउ रीअरेंजिंग स्लाइड्स इन स्लाइड सॉर्टर व्यू, तो एमएस पावर पॉइंट के अंदर नॉर्मल व्यू डिस्प्ले करता है वन स्लाइड एट अ टाइम। Thus, ये फेल होता है टू प्रोवाइड अ बिगर पिक्चर ऑफ द प्रेजेंटेशन। हेंस इसमें डिफिकल्ट हो जाता है टू व्यू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू हमें ऑफर करता है ओवरऑल व्यू ऑफ प्रेजेंटेशन एंड हेल्प करता है हमारी टू सॉर्ट द प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बाय ड्रैगिंग देम टू एप्रोप्रिएट पोर्शंस। नाउ यू कैन यूज स्लाइड सॉर्टर व्यू टू ऑर्गेनाइज स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। तो हमें क्लिक करना है व्यू टैब पे इन द प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप, क्लिक करना है स्लाइड सॉर्टर पे, स्लाइड सॉर्टर व्यू अपीयर्स। To rearrange the slide आप क्लिक करके सिंपली उसको ड्रैग कर सकते हो टू द रिक्वायर्ड पोजीशन। टू सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ स्लाइड्स इन अ स्लाइड सॉर्टर व्यू आप क्लिक करके ड्रैग करोगे माउस को ओवर द रिक्वायर्ड स्लाइड। रन अ स्लाइड शो, टू रन अ स्लाइड शो आप जाओगे ऑन द स्लाइड शो टैब इन द स्टार्टिंग स्लाइड शो ग्रुप, क्लिक द फ्रॉम बिगनिंग बटन
एंड पावर पॉइंट डिस्प्ले करेगा एक फुल स्क्रीन व्यू ऑफ द फर्स्ट स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन आफ्टर द लास्ट स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन. पावर पॉइंट डिस्प्ले करेगा एक ब्लैक स्लाइड. When you deliver the presentation, जब आप एक presentation deliver करोगे from your computer, you should be familiar with the tools जो available है in slide show views as the slide occupies entire screen. Now, अगर आप navigate करना चाहते हो इन slides को by clicking the mouse button या फिर by pressing the arrow keys on the keyboard, moving forward and backward one slide at a time. ड्यूरिंग द स्लाइड शो आप मार्क कर सकते हो अपने स्लाइड को ऑन स्क्रीन पेन या फिर हाइलाइटर का यूज कर सकते हो टू एम्फसाइज अ पॉइंट. राइट क्लिक ऑन द स्लाइड एंड चूज एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन. टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड आप F5 की का यूज कर सकते हो. टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम करंट स्लाइड आप प्रेस कर सकते हो शिफ्ट प्लस F5 की. एंड टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन बिफोर रीच द एंड आप प्रेस कर सकते हो एस्केप. Reviewing and printing presentation. So before you print your copy, it is good idea to preview your presentation. तो आपको फाइल टैब पे जाना है, बैकस्टेज व्यू अपीयर होगा, वहां से आप प्रिंट पे क्लिक करोगे. नोटिस दैट जो प्रिंट सेटिंग्स हैं एंड द प्रीव्यू ऑफ द प्रेजेंटेशन अपीयर टुगेदर. प्रिंट सेटिंग्स और प्रीव्यू एक साथ आता है. नाउ विद प्रिंट सेटिंग ऑन द लेफ्ट, एक प्रीव्यू जो होता है वो होता है हमारे राइट पे अवेलेबल. आप नेविगेट कर सकते हो अपने स्लाइड्स को इन द प्रीव्यू पे एंड आप क्लिक कर सकते हो नेक्स्ट पेज या फिर प्रीवियस पेज बटन पे इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेन टू मूव अमंग द स्लाइड्स. टू जूम इन वन पार्ट ऑफ अ स्लाइड आप जूम इन पे या जूम आउट बटन का यूज कर सकते हो. जूम स्लाइडर पे इन द लोअर राइट कॉर्नर क्लिक कर सकते हो जूम टू पेज बटन पे टू फिट द स्लाइड टू द पेज. कॉपीज यहाँ पे आप क्लिक करते हो एरोज को टू एडजस्ट द नंबर ऑफ कॉपीज. प्रिंटर यहाँ पे आप स्पेसिफाई करते हो प्रिंटर यू वांट टू यूज एंड सेट करते हो उसकी प्रॉपर्टीज. अंडर सेटिंग्स एंड प्रिंट ऑल स्लाइड्स आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो ऑल द स्लाइड्स एंड द सेलेक्टेड स्लाइड्स और या फिर द करंट स्लाइड. टू प्रिंट ओनली स्पेसिफिक स्लाइड आप क्लिक करते हो स्लाइड बॉक्स पे, एंटर करते हो स्लाइड नंबर एंड रेंज सेपरेटेड बाय कॉमास, नो स्पेसेस. फॉर एग्जांपल एंटर 148 -10 to 8 to 10 to print slides 1 to 10, 1, 4, 8, 9 and 10. Print layout gallery specify whether the print slide यानी कि 1 per page notes page के लिए 1 half size slide per page with space for notes or an outline. Under handout section आप print कर सकते हो handout को specifying the number of slides that print on each page like 1, 2, 3, 4, 6 या फिर 9 and their order. Like here collated section collect करता है multiple copies को. If you are printing multiple copies of a presentation, specify whether complete copies should be printed one at a time. कलर स्पेसिफाई करता है कि whether जो presentation है वो प्रिंट होनी चाहिए कलर में, ग्रे स्केल में या फिर प्योर ब्लैक एंड व्हाइट. फ्रेम स्लाइड यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इस ऑप्शन पे टू पुट द फ्रेम अराउंड द स्लाइड ऑफ द प्रिंटेड पेज. स्केल टू फिट पेपर यहाँ पे स्केल स्लाइड्स ये स्केल करता है हमारी स्लाइड को. इफ यू हैव not set the size of the slide to match the size of the paper in the printer. Note that जो color copy है will be printed on a color printed only. Edit header and footer display करता है header and footer dialog box. Now specify printing option and then click the print button. The presentation gets printed. Let's revise the chapter. Presentations are made up of several pages called slides. Transition एक animation होता है जो occur होता है when a PowerPoint advances from one slide to the next during a slideshow. Each slides can have only one transition. Animation एक special visual effect है जिसको apply किया जाता है किसी object पे ना slide जैसे text, image, shape, bulleted points to make the object move. Motion paths हमारे object को move कराते हैं within a slide. The slide tab displays small thumbnails of all the slides in active presentation. Let's do the exercise. First is tick the correct option. In which of the following views आप check कर सकते हो order of slide and also add, delete या rearrange कर सकते हो. So it is slide sorter view. Which view आप edit कर सकते हो? Speaker notes, notes page. Presentations are made up of different pages called slides. MS PowerPoint is a part of Microsoft Office suite. In which view you can mark slide with an on-screen pen या फिर highlighter to emphasize a point. Reading view. To stop a presentation, the slideshow view before you reach the end, which key will you press? So it is escape key. Let's do fill in the blanks.
So here the first one is to print a presentation, go to file and then print option. Now dash category of transition includes fade, wipe and shutter-like effect, subtle. To remove a transition effect on the transition tab, transition to this slide group, click the more button then none. To run a slideshow from start on the slideshow tab in the start slideshow group, click the from beginning button. Now dash makes the entry of the elements on a slide interactive. And let's do true false. You can only apply a transition speed only one slide at a time. False. Reviewing your transition effect is not important. False. MS PowerPoint is a spreadsheet software. True. Avoid abrupt transition by having one slide smoothly replace another. True. The shapes can be rotated, flipped, colored, and resized. True. So, students, this was your complete chapter. I hope it is clear to you. Do revise it once again and also learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care.